Many of you have already seen my videos on the channel called Knowledge with Nandini. In this month, sometimes August, I'm going to start a 2-month certificate course. You can write to me, WhatsApp me on this number 83560576693. If you send me a WhatsApp on this number, I will send you all the details of the course. It will be for 2 months. That means there will be 16 lectures, 2 times a week. And you can join any time in the course. It's a rolling course. Means after 16 turns, first lecture will be repeated. If you join from number 2nd lecture, you can do the first lecture afterwards, last. So anytime you can join the course, you will get a certificate. And the main important thing is, I'm going to teach in Hindi and English. ये कोर्स मैं खास इसके लिए कर रही हूँ कि बहुत सारे कोर्स अंग्रेजी में होते हैं और हिंदी में लोगों को नहीं समझ आता. तो मैं पर्सनली अच्छे से आपको बता के एक एक को समझा के, मुझे सर्टिफिकेट नहीं देना है, मुझे पैसा नहीं कमाना है. मैं चाहती हूँ कि हर एक जन जो ज्वाइन करे उसको CSC में सब कुछ मालूम हो. Now you can mute everyone. You can mute everyone, please. हाँ? So I want कि CSC के जितने लोग हैं जो कोर्स ज्वाइन करे, उनको हर एक चीज CSC के बारे में आए. चाहे मुझे 4 बार वही बात बोलनी पड़े, चाहे आपकी डिफिकल्टी आंसर करनी पड़े. So that is about the certificate course. Please send me a WhatsApp if you want to do the course. I will also be sharing it on my groups, WhatsApp group, and on LinkedIn from tomorrow. But all details you will get if you write to me or you speak to me. If you phone me, you can phone me. I don't mind. Today we are going to do a small presentation in Hindi and English. And the topic is dressing material, selection, packing and sterilization. What is the definition of dressing material? उसका मतलब क्या है? वो कोई भी मटेरियल ऐसा होता है जो कवर करता है या ट्रीट करता है या प्रोटेक्ट करता है वुंड को. जब हमें चोट लगती है या जब हमारे ओटी के अंदर कट करते हैं, so this material covers, treats and protects the wound. It promotes healing. ये हीलिंग में हेल्प करता है, मतलब जल्दी ठीक होने में हेल्प करता है. और डायरेक्ट कांटेक्ट विद द वुंड, दैट मींस वुंड को टच करता है. बैंडेज जो होती है वो ड्रेसिंग मटेरियल के ऊपर हम बांधते हैं, उसको बैंडेज बोलते हैं. बट ड्रेसिंग मटेरियल डायरेक्टली टचेस द वुंड. What is the history of dressing material? पहले क्या होता था? बहुत साल पहले बहुत अलग अलग टाइप के, पहले भी चोट लगती थी तो हम अलग अलग टाइप के मटेरियल यूज करते थे. यहाँ पे कुछ नाम दिए हैं: हनी, शहद, काउवेब, मकड़ी का जाल, पत्ते. तो पुराने जमाने में इस सब से इलाज करते थे. आजकल व्हाट डू वी हैव? वी हैव गॉज, जिसका हम आज जिक्र करेंगे क्योंकि ये हम बनाते हैं हॉस्पिटल के अंदर. फिल्म्स है वेरियस टाइप्स की, तो बाजार में मिलती है. जेल, फोम, दीज आर रेडीमेड. सो CSSG people will not be involved in this. We must know where the word gauze comes from. It comes from gaze or from Gaza. Gaze is a French word which means gauze. So that's why we started calling it gauze. And Gaza is a place. गाजा एक जगह है जहां पे ये गॉज बनता था पहले. अभी बहुत ध्यान से सुनिए. व्हाट इज एन आइडियल वुंड ड्रेसिंग? आइडियल मतलब कि इसमें क्या क्या होना चाहिए. ये तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर कॉमन सेंस. इट शुड प्रोवाइड मैकेनिकल एंड बैक्टीरियल प्रोटेक्शन. मैकेनिकल मतलब हमें चोट नहीं लग सकती. अगर कोई टच करेगा हमारा वुंड तो ड्रेसिंग मटेरियल होगा. मैकेनिकल प्रोटेक्शन. बैक्टीरियल प्रोटेक्शन, कीटाणु अंदर नहीं जाते. इट शुड मेंटेन अ मॉइस्ट एनवायरनमेंट
at the wound interface. Moist क्यों? अगर हमारी wound जो है, हमारी चोट या कट सूख जाता है ज्यादा तो वो जल्दी ठीक नहीं हो पाता, तो इसके लिए इसको हल्का गीला रखना होता है, मॉइस्ट रखना होता है. इसमें से गैस बाहर निकलती है और कुछ कुछ पास ब्लड भी निकल सकता है. सो इट शुड अलाउ गैसियस एंड फ्लूइड एक्सचेंज, मतलब ये बाहर निकल पाए. रिमेन नॉन अडियरेंट टू द वुंड. नॉन अडियरेंट मतलब इसे चिपकना नहीं चाहिए. एंड इट शुड बी सेफ टू यूज, नॉन टॉक्सिक. ये तो जायज है, मतलब सबको पता है कि पॉइजनस नहीं होना चाहिए. नॉन एलर्जेनिक मतलब इससे एलर्जी नहीं हो किसी टाइप की. और अगर ऐसा वुंड है जिसमें से खून बाहर आ रहा है या पस बाहर आ रहा है, इसको बोलते हैं एक्सक्यूडिंग वुंड. सो इफ इट इज एन एक्सक्यूडिंग वुंड देन इट हैज टू बी अब्सॉर्बेबल. इसके लिए हमारे गॉज का नाम है अब्सॉर्बेंट गॉज. जो हम खरीदते हैं, आप पैकेट पे देखो, इट इज रिटन अब्सॉर्बेंट गॉज. ओके, इट हैज टू अब्सॉर्ब ऑल द मटीरियल विच कम्स आउट ऑफ द वुंड. एंड सबसे लास्ट देखो, सबसे इम्पोर्टेंट, स्टेराइल, because it is put directly on the wound, so it comes in contact with the blood. कभी भी हम ये अनस्टेराइल नहीं दे सकते हैं अगर वुंड के कांटेक्ट में डायरेक्ट आने वाला. Gauze is a thin translucent fabric with a loose open weave. Thin तो समझे पतला सा, translucent मतलब ट्रांसपेरेंट नहीं होता है, बिल्कुल शीशे जैसा नहीं होता है, और बिल्कुल प्लास्टिक जैसा ओपेक नहीं होता है. ओपेक मतलब जिसके आर पार नहीं दिखता है. ट्रांसल्यूसेंट मतलब हल्का हल्का दिखता है, मिल्की जैसा, उसको बोलते हैं ट्रांसल्यूसेंट. विद अ लूज, ढीला, ओपन वीव. ओपन वीव ऐसा होता है कि साथ साथ में धागे टच नहीं होते हैं. जो एक साइड धागे जा रहे हैं वो थोड़ी थोड़ी दूरी पे हैं एक दूसरे से, बीच में जाली या मेश बन जाता है. ये गाजा में सबसे पहली बार बना था, जो पैलेस्टाइन शहर में है, कंट्री में है, पैलेस्टाइन में गाजा. इसके लिए उसका नाम पड़ गया गॉज. एक बहुत अहम बात, यहाँ बहुत सारे सीनियर भी ज्वाइन हुए मैंने देखा, पर अगर कोई छोटे जूनियर्स हैं, गॉज इज 100% कॉटन. नहीं तो उसको गॉज नहीं बोल सकते हैं. Dressing material, I told you, films are there, gel is there, foam is there. They can be non-cotton. Gauze मतलब cotton, pure cotton. Cotton plant से आता है ये. Okay, this comes from the cotton plant, and it is good for wounds where other fabrics might stick. ये चिपकता नहीं है बिल्कुल, तो ये बहुत काम में आता है हमारे ओटी में. और बहुत सालों से अब गॉज भी यूज में आ चुका है. तो गॉज क्या है? लाइट मेश्ड फैब्रिक. मेश्ड मतलब जाली वाला, जो मैंने बताया था, ओपन वीव वाला, ऑफ मसलिन. आप लोग कई बार पढ़ते हो हमारा लिनन मसलिन का बना है. लिनन इज ऑल्सो कॉटन, मसलिन इज प्योर कॉटन. ओके, कॉटन इज अ कॉटन ट्री, गॉज इज मेड फ्रॉम द कॉटन प्लांट. सो मसलिन, लिनन, everything is pure cotton. If you use a drape or a packing material SMS, then you can't use the word linen. It is not linen. Linen means cotton. Okay, so gauze is any fabric made of muslin. It can be used, कहाँ use होता है? Bandage, dressing and sponge. Mostly we use it as bandage, direct dressing material or sponge. And what is absorbent gauze? तो absorbent gauze की कई अच्छी प्रॉपर्टी होती है. गॉज ही है, but it has a special absorbency. Okay, and it is always white, and it is different thread count. Thread count means how much threads are there in 1 inch or in 10 centimeters, and it has different weights, and it may come to you in different length and different width. अलग अलग लंबाई में आता है, अलग अलग चौड़ाई में आता है. पैराफिन गॉज. तो ये चार गॉज खाली कपड़े को बोलते हैं. अब्सॉर्बेंट गॉज स्पेशल कपड़े को बोलते. गॉज का कपड़ा होता है जिसमें अब्सॉर्बेंसी होती है, कितनी होनी चाहिए आगे देखेंगे.
पैराफिन गॉज वो गॉज होता है जिसमें पैराफिन डाला हुआ होता है अंदर, एंड इट इज यूज्ड एज अ नॉन स्टिकिंग कोटिंग. ये बिल्कुल नहीं चिपकेगा क्योंकि पैराफिन अंदर होता है, तो बर्न्स के लिए बहुत यूज होता है ये. एंड लास्ट वन इज एक्सरे डिटेक्टेबल गॉज. तो इसमें एक फिल्म, आप सबने देखा होगा, एक फिल्म रहती है, धागा जैसा रहता है, और वो इसमें सिला रहता है या हीट से इसमें चिपकाया जाता है या उसके अंदर बुना जाता है एक धागा. स्टिचिंग और वीविंग और हीट सीलिंग से ये गॉज के अंदर रहता है, मोस्टली फॉर ओटी गॉज भी यूज, एंड इट हैज अ डिस्टिंक्ट कलर. ये एक जोक है, मुझे जोक्स बहुत ज्यादा पसंद है. तो जो ये सिस्टर है, ये पहले गिफ्ट शॉप में काम करती थी, तो इसने पेशेंट को बैंडेज करने के बाद थोड़ा बो वगैरह रिबन लगा दिया है. तो डॉक्टर कह रहा है आप कभी नहीं भूलोगी क्या सिस्टर कि आप गिफ्ट शॉप में काम करते थे. तो जो लंबाई में धागे दौड़ते हैं, अगर लंबा थान है, जो लंबाई में धागे जाते हैं उनको वॉप बोलते हैं. आप लोग फोटो ले सकते हो बेटा, अगर आप भूल जाते हो, मैं तो भूल जाती हूँ वॉप और वेस्ट. So the thread which runs lengthwise, it is called warp. Don't forget. And the thread that is runs widthwise, under and over the warp, is called the weft. तो ये दो शब्द आपको जरूर आने चाहिए CSSD में काम करते हो तो, warp and weft. मैंने आपको बोला था कि मैं सिलेक्शन के बारे में बताऊंगी. I want to tell you about the selection of the packing material, of the dressing material, sorry. So in India, mostly we follow the dressing material which is of schedule F2. How will you know it is schedule F2? So 40 years back when I joined Jaslo, we used to do all the tests by ourselves. Take starch, burn the gauze, measure the gauze. Nowadays, we mostly get the gauze which is cut and packed. So you can't take the length of the gauze. You can still test the material, but first, I'm not saying don't test it, but I feel it is not necessary. Your manufacturer of gauze has to give you a certificate that this is as per schedule F2. And you have to ask him the F2 standards ka copy. Schedule F2 is a part of the Drugs Act and Cosmetic Rules. एक Drugs Act है pharmacy के लिए, pharma के लिए, उसमें ये गॉज का स्पेसिफिकेशन F2 में दिया हुआ है. हर एक आदमी के पास शेड्यूल F2 होना चाहिए और आपका मैन्युफैक्चरर का सर्टिफिकेट कि आपका गॉज F2 स्टैंडर्ड से कंप्लाई करता है. इट हैज पास्ड ऑल द टेस्ट. ओके. Drugs Act and Cosmetic Rules 1945. It gives the requirements for Indian healthcare, so many requirements. But in F2 we have the gauze requirements. There are many other standards. और भी कई standards हैं. BS is British standards, British pharmacopoeia. EP is European pharmacopoeia. USP is US pharmacopoeia. And IP में भी cotton है, Indian pharmacopoeia. And many suppliers give European pharmacopoeia gauze, which is better, slightly more superior than schedule F2 gauze. You may pay a little more. Okay, so you have to decide which one you have to take. Only thing, if you're paying for schedule F2 gauze, then you should get that standard. If you're paying for EP quality gauze, European pharmacopoeia, you should get that standard. So please be very, very careful that what you are told that what standard it is actually of that standard. Indian pharmacopoeia gives the requirement only for cotton, as I told you, because gauze is already in schedule F2. Which cotton? Surgical use cotton, means our cotton. So what are the types of gauze dressings available? So we have the thans of absorbent gauze. I have used. Our boys used to cut it with a scissor. Okay. So we used to get in thans, or now we get the ready-made gauze swab.
We get gauze swabs, what we call OT gauze and ward gauze. We have gauze pads, means many layers of gauze kept together, not single swabs. Okay, gauze pads. We have gauze sponges, which we also call mops. We also call... Mehes, now we have everyone muted, beta. Everyone is muted. If you want, I will unmute myself. Mute everyone. We have the... Yes, ma'am, you'll have to unmute yourself now. From the other device, ma'am. From the other device. Okay, got it. Good, thank you. So we'll say for all the types of gauze dressing available: absorbent gauze than, absorbent gauze swab, gauze pads, gauze sponges, which we also call as mops in the operation in the hospital, and X-ray detectable gauze swabs. आप सब लोग इन सबको जानते हो, okay? And why we need gauze swabs? There is something very interesting, that there is a word, when you forget the swab inside the patient's stomach, there's a word for it. It is called gossipiboma. Why is it called gossipiboma? Because the plant is Gossypidium, the cotton plant. So gossipiboma means the forgotten swab. Many times it happens that the swab is left behind in the patient's stomach. कई बार गॉज छूट जाता है क्योंकि बहुत सारा खून होता है पेशेंट की सर्जरी साइट पे. उसका नाम ही दिया गॉसिपाइबोमा. अगर पेशेंट को सिल दें और ये एक्सरे डिटेक्टेबल थ्रेड है तो हम बाहर से ही देख सकते हैं. अगर कोई तकलीफ हुई पेशेंट को एक्सरे मशीन से देख सकते हैं कि स्वॉब अंदर रह गया है कि नहीं. स्पेशली फॉर ओटी, because for the wards, cath lab, the swab might not go inside the patient. बाहर ही बाहर रहेगा. पर ओटी में तो अंदर 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 चला जाता है और फिर कभी कभी छूट भी सकता है. So take X-ray detectable swab. मैंने पहले ही बोला था gauze is manufactured only from cotton thread. Okay, and it is woven like fabric. कॉटन के धागे से बनता है और धागे को बुनते हैं, जैसे हैंडलूम पे हमारी साड़ी और ड्रेस बुनते हैं, का मटेरियल बुनते हैं, तो इसको बुनते हैं. ओके, इसको पास पास कर सकते हैं या दूर दूर कर सकते हैं, लूज और टाइट. लूज वन हैज लार्ज इंटरस्टाइसेस, टाइट वन हैज स्मॉल इंटरस्टाइसेस. इंटरस्टाइसेस मीन स्पेस in between the threads. Because these are the things you have to read. I'm going to upload it on Knowledge with Nandini, so you can see it again, learn some new words. For all the, stamina we spend to teach all this, read it again, read it 3 times, share it with your friends, learn what is interstice, learn all these words. But I'm talking as a teacher, learn all this. You'll be then have more knowledge about all your gauze things. Okay, so what is interstice, you see, and it can be used as primary dressing or secondary dressing. मतलब आप कुछ लगा के ऊपर से भी गॉज से बांध सकते हो या डायरेक्ट गॉज यूज कर सकते हो, because of all these good qualities it has. And it is non-adherent. Adherent means sticking, चिपकना. ये चिपकता नहीं है तो निकालने में बहुत इजी पड़ता है. नॉन ट्रॉमेटिक मतलब इसको आराम से निकाला जा सकता है बिना दुखाए, पेशेंट के बिना पेन दिए कुछ भी. So these are some of the F2 specifications. If no one is giving you, you can take a picture.
गॉज इज ऑल्सो कॉल्ड अनमेडिकेटेड गॉज. मैंने नहीं नाम दिए, ये सब फार्माकोपिया में आते हैं नाम है, और शेड्यूल में है, शेड्यूल F2 में. Gauze, unmedicated gauze, absorbent cotton gauze. Why cotton gauze? It comes from cotton plant, okay? Then it is cotton fabric of plain weave. You can get various width and length. It does not have starch. It is made of cotton yarn. It has a selvage. Selvage का क्या मतलब बेटा? Selvage का मतलब धागे इतने पास पास होते हैं साइड में, दोनों साइड में, कि वो फिर खुलता नहीं है. It does not unravel because of the selvage. So in the yarn, in the than when it comes, or in a bundle or roll if you like to call it, it has a selvage on both sides. Side में selvage, बीच में loose open weaving is there. And you please write down this in your diary or take picture. The walk should not be less than 75 and depth should not be less than 55. And I told you different weights are there. If it is schedule F2, you have to cut 1 meter of cloth. It should not be less than 30 grams, plus or minus 5 grams. Okay? Grams per meter square is 30. Means 1 meter of cloth is 30 grams. 1 meter cloth आप लेंगे तो 30 ग्राम आएगा. ओके? और अगर आपने थान में लिया तो अगर 1 मीटर बोलेंगे या 18 मीटर जितना भी थान है उसका 98% तो होना ही चाहिए. 1 मीटर बोल के आधा मीटर नहीं चलेगा, 98 सेंटीमीटर चलेगा. मैंने नहीं बोला, it is as per schedule F2. This is the most important absorbency. The sinking time should be not more than 10 seconds. Okay? It should sink within 10 seconds. There should be not much fluorescence. So few points can be seen. These are the schedule F2 standards. We may not be able to do all the tests, but we should know the test. Foreign matter should not be more than 1%. मतलब आप 1 मीटर बाय 1 मीटर का पीस दोगे तो उसमें एक हल्का सा कुछ पत्ती आ सकता है. ये तो अंदाजे से करना है by approximation. Then we can't give in than to the OT, so we have to cut it and we have to fold it and we have to pack it and we have to see that it does not get dry and the absorbency does not get less. हमें कट करना है, इसको पैक करना है और ऐसे मटेरियल में करना है कि ये सूख नहीं जाए. टोटल सूख जाएगा तो फिर इसका अब्सॉर्बेंसी कम हो जाएगा. और ऐसा पैकिंग करना है जिससे कि ये फटे नहीं नॉर्मल हैंडलिंग के टाइम, और इसके सारे जो अंदर के कंटेंट है, कंटेंट मतलब अंदर जो है पैकेट में गॉज, वो बाहर नहीं दिखाई पड़े, नहीं तो स्टेराइल नहीं रहेगा. आपको लिखना है अंदर क्या है, और अगर थान दे रहे हो तो पूरा थान, ये तो वेंडर के लिए है कि वो थान में देंगे तो थान का पूरा कितना लंबाई है कितना चौड़ाई है लिखिए. बैंडेज को बोलते हैं सिनोनिम का क्या मतलब? सिनोनिम, so you can learn lot of new English words also. Synonym means same, another word for the same thing, same thing. Okay, synonym. So it is bandage cloth, bleach bandage cloth, roll bandage, open wove bandage क्योंकि ये भी joints नहीं होती है, cotton bandage, इतना सारा नाम है cloth. It is also made of cotton. It also contains no filling, मतलब बीच में कुछ डालते नहीं है जेल जैसा गाढ़ा करने को. साइजिंग माने स्टार्च, लिख लो. साइजिंग मतलब स्टार्च और एनी अदर ड्रेसिंग मटेरियल, बीच में और कुछ नहीं डालते इसको भरने के लिए. इसको रोल फॉर्म में भी आ सकता है या कट कर सकते हैं, लंबे लंबे रोल भी आ सकते हैं. ये सब बेटा शेड्यूल F2 कह रहा है. All this is given in schedule F2. Then if you have uncut bandages, it may be one long bandage and you can cut it what size you want in the hospital. Okay, and it is cotton cloth of plain weave, same to same. Only thing इसका weave थोड़ा पास पास होता है, just like a
just like a gauze. It is just like gauze. So, and it can be in one continuous length. It has no joints. आप दो तीन बैंडेज को मिला के एक बैंडेज नहीं बना सकते. And very good selvage. जैसे गॉज थान में सेल्वेज होता है, बैंडेज में भी सेल्वेज होता है. It is white, clean and odorless. You can bleach the bandage. You can bleach both to white, but it should be clean and no smell of course, and no weaving defects. बीच बीच में बुनाई में ऐसा ऐसा आड़ा टेढ़ा नहीं होना चाहिए, और उसमें बहुत सारा पत्ती और बीजा नहीं होना चाहिए, क्योंकि कॉटन प्लांट से आता है ना. कट बैंडेज है तो भी वो अनकट बैंडेज जैसा ही है, पर उसको सेल्वेज नहीं रहेगा, क्योंकि आप कट करके पीस करोगे ना, तो उसमें सेल्वेज नहीं रहेगा. ओके, आप यू हैव टू कट इट स्ट्रेट एंड इवनली कट, और इवन आपका सप्लायर भी कट करके देगा आपको, तो उसको भी स्ट्रेट कट करना है. ओके, अच्छा, ये थोड़ा पास पास रहता है, इसके लिए लिख लो, वॉक हैज टू बी 150 थ्रेड. जो आपका वॉक वाले धागे हैं उनको 150 होना चाहिए 10 सेंटीमीटर में. डेसीमीटर मतलब 10 सेंटीमीटर. 10 सेंटीमीटर को मापो, और उसमें 150 धागे होने चाहिए लंबाई में, और चौड़ाई में 85 धागे होने चाहिए. और इसका वेट भी ज्यादा रहेगा, क्योंकि ज्यादा धागे हैं और ये सपोर्ट के लिए यूज होता है. तो इसका वेट है 57 ग्राम. ओके, 5 ग्राम प्लस और माइनस अलाउड है. ये सब आप पक्का लिख लो, पक्की बात है, शेड्यूल F2 से है. और ये ऐसा बुनने के बाद ऐसा पास में नहीं आता है, रिंकल नहीं होता है. इसके लिए जो भी लिखा है सप्लायर ने, उसका 99% करेक्ट होना चाहिए. 100 सेंटीमीटर लिखा है तो कम से कम आपको 99 सेंटीमीटर देगा. ये आपको मापना चाहिए बेटा. अगर आप रेडीमेड लोगे तो भी यू शुड मेजर दिस, and don't measure only samples. When you get your delivery, you should take some samples from that and measure it and see if it is clean. At least simple tests you can do, no? Absorbency, cleaning, length, breadth. This you should do. Same fluorescence, because there should be not much fluorescence, because it is washed after bleaching. So there should be not much fluorescence. Foreign matter should not be more than 2%, and it should be packed. Even if you get cut bandage from the supplier already cut, you must have seen already, it comes packed in brown paper. It is already packed individually. Okay, each bandage is individually wrapped in suitable paper. See here, yahan dekho, yahan dekho. Okay, if it is cut and rolled, it shall be individually packed also. नहीं तो पूरा खुल जाएगा आपके पास आते आते. अगर आपका सप्लायर के पास से आ रहा है, if it comes from the supplier, he has to write on that non-sterile. If you are taking sterile, then no problem. But if you are not taking sterile, he has to write on that any unsterile dressing material which you take, it has to be written non-sterile. Okay. For both storage for cotton than, gauze than, as well as bandages or bandage cloth, it should be in a packed, cut one should be in packed condition and protected from dust. Everything should be packed and protected from dust when it comes to you. One sec. So we have come to the definition of Gamgee now. So this was another joke. So बटरफ्लाई मालूम है ना आप लोगों को सबको? तितली. तितली बनने के पहले एक छोटा सा ऐसा कीड़ा रहता है, ककून. तो सिस्टर बोल रही है इसको इतना अच्छा पैकिंग किया, लगता है थोड़े दिन में ये तितली बन जाएगा.
So Ganji is a dressing consisting of a thickness of cotton wool between two gauze. दो गॉज पीस के बीच में एक कॉटन वूल रहेगा, उसको गैंजी बोलते हैं। और ये गैंजी शब्द कैसे आया, बेटा प्लीज नोट ऑल दिस, सी इट अगेन और टेक अ फोटो और सी द video again or write down. So Joseph S. Ganji, he was an English surgeon and he thought that we should keep cotton in the middle of the gauze, probably for better absorbency. Okay? तब से गैंजी बनने लगा। उन्होंने पहली बार बनाया, जोसेफ गैंजी ने पहली बार बनाया गैंजी पैड और तब से गैंजी भी आ गया मार्केट में। Now we come to cotton, क्योंकि कॉटन गैंजी में भी डालना और वैसे भी देते हैं हम। तो कॉटन प्लांट से आता है और इसमें से सीड्स जो हैं, वैक्सी मैटर, वो सब निकाल देते हैं। We remove the seeds and waxy matter and we bleach the gauze and then we use as dressing. We also sterilize it. So what is that from the plant? What we take? We take the hair of the seed of the plant Gossypidium. Okay, you can see all the hairs are made into little fibers and then we get that cotton roll which each and every one of you has seen. And we make it into cotton swabs which each and every one of you has seen, which you can see in this picture. So the hair is separated from the seed. बाल को अलग कर देते जो सीड के ऊपर बाल होते हैं। The long hair are used to make cloth. लंबे बाल से कपड़ा बनता है और छोटे बाल से कॉटन रोल बन जाता है। अब आप समझ गए सब लोग, लिनन और कॉटन और गॉज हम लोग को कितना प्यारा है। एक ही प्लांट कॉटन के छोटे छोटे बालों से हम कॉटन रोल बनाते हैं और वो हमें मिलता है स्वॉब बनाने के लिए। और जो लंबे लंबे बाल हैं उनसे धागा बनता है और उनसे हमारा गॉज बनता है। इट्स अ सर्जिकल ड्रेसिंग, ये भी ड्रेसिंग से यूज करते हैं। इनका फाइबर 10 mm 10 मिलीमीटर यानी 1 सेंटीमीटर से कम नहीं होता है और उसमें लीफ, सीड और अदर इम्प्योरिटीज नहीं रहती हैं। हल्का जरा मरा रह सकता है, ट्रेसेस। ओके, ट्रेसेस ऑफ इम्प्योरिटीज आर देयर। कौन सी इम्प्योरिटी? मक्खी मच्छर नहीं। ओके, ओनली पत्ता या सीड का थोड़ा सा पोर्शन या ऐसा रह सकता है। ओके, एंड इट डज नॉट शेड डस्ट, क्योंकि इसमें लंबे लंबे धागे होते हैं, छोटे छोटे नहीं होते। तो आप ऐसे ऐसे झाड़ोगे तो भी ज्यादा डस्ट नहीं आना चाहिए। ओके, स्मेल नहीं होता है इसको बिल्कुल। 500 ग्राम से ऊपर नहीं मिलता है ये, 500 ग्राम से कम मिल सकता है, 100 250 ग्राम। एंड देयर इज अ पेपर रनिंग अंडर द इंटायर लैक। इफ यू ओपन द रोल यू विल सी अंदर अंदर भी पेपर है। इसको अच्छे से पेपर पे बिछा के करते हैं, रोल करते हैं। इट इज सील्ड इन अ वेल क्लोज्ड कंटेनर और पेपर। So now the question comes, and I'm going to ask you all also, should we make the dressing material ourselves or should we take ready-made? Okay. First, before that, I want to tell you, last time also I had an argument. Some people said, I won't say argument, we had a discussion that whether drum should be used or not. Drum should not be used. They are not recommending. Nandini is not saying. All the books, all the guidelines, AME standards, CDC standards, WHO are saying do not use drums. Okay, it is not that Nandini is saying. So how you pack the dressing material? One packet, one dressing material for one use. Once you open the packet, you cannot keep any dressing material pending. हम पैकेट खोल लेंगे और हम यूज नहीं भी कर पाए तो हम उसे बाकी नहीं रख सकते। आधा यूज करके भी आधा बाकी नहीं रख सकते।
पैकेट खोलते ही पूरा यूज करना है, बाकी का नहीं यूज कर सकते। ओके, तो ये ड्रम, जार्स एंड कैनिस्टर्स ये सब आजकल यूज में नहीं होते हैं। तो पैक किस में करते हैं ये आपको पता है, फिर भी मैं बोल देती हूँ कि हम पेपर में करते हैं या पील पाउच में करते हैं। इस पे हम नाम लिखते हैं और हम एक्सपायरी डेट भी लिखते हैं। ओके, नाम अगर पील पाउच में तो हमें दिख जाएगा गॉज है, पर कितना लंबा गॉज है, 8 इंच वाला है कि 4 इंच वाला है, वो तो यूजर को नहीं पता चलेगा ना। तो आपको नाम, मेजरमेंट और एक्सपायरी डेट और इंडिकेटर लगाना पड़ेगा उसके। पेपर इज ऑल्सो अ नॉन वोवन फैब्रिक। वो कपड़े जैसा नहीं होता, वो बुन के नहीं बनाते हैं, पर खाली ये है कि वो हल्का होता है, जल्दी फट जाता है। So it is a non-woven fabric, but it's used for small devices. और जो भी हम पेपर यूज करते हैं, आप बहुत ध्यान से सुनो बेटा, और अपने फ्रेंड्स से शेयर करो, ये वीडियो शेयर करो। इट हैज टू बी 60 GSM। GSM क्या है मैं नहीं बताने वाली हूँ, आप बताओगे मुझे। ओके, तो यू टेल मी एट द एंड व्हाट इज GSM। It should be not less than 60 GSM. इट हैज अ मेमोरी। मेमोरी मतलब यादगाश। यादगाश कैसे, आप फोल्ड करोगे तो आप खोलोगे तो लाइन आएगी, लिनन को आप ऐसे करोगे खोलोगे तो कोई लाइन नहीं आएगी। तो इसके लिए बोलते हैं पेपर हैज अ मेमोरी। ओके, यू कांट फोल्ड इट अगेन सेकेंड टाइम, एंड इट डज नॉट हैव गुड वेट स्ट्रेंथ। अगर कपड़ा गीला हो जाएगा तो भी फटेगा नहीं, पेपर गीला होगा तो तुरंत फट जाएगा। दैट मीन्स गीला होने के बाद उसका स्ट्रेंथ कम है। नो गुड वेट स्ट्रेंथ एंड इट कैन टेयर इजिली। आप एक छोटा सा पेन मारोगे नोक तो फट जाएगा, शायद दूसरे पैकिंग मटेरियल नहीं फटेगी इतनी जल्दी। Therefore, it is used for small light devices. No, naturally, अगर वो फटने वाला है तो आप भारी चीज नहीं डालोगे ना, वो छोटी छोटी हल्की हल्की चीजों के लिए। ये स्टीम में भी यूज हो सकता है, ETO में भी यूज हो सकता है। क्या चीज, पेपर प्लास्टिक मटेरियल। It can be used in steam and ethylene oxide because it has one side paper and one side plastic, and it is sealed, already sealed lengthwise. मतलब आपको ऑलरेडी रील में मिलता है, ठीक है, रील्स या रोल्स जिसको फ्लैट रील भी बोलते हैं। और जब आपको इसको लेबल करना है, कुछ लिखना है, तो आप प्लास्टिक साइड पे करेंगे। हमने पहले भी बोला बॉल पॉइंट निब से पेपर फट जाएगा। अच्छा पेपर होगा तो भी, पेपर इज पेपर, ओके, इट कैन tear, it may be a small hole you cannot see, so never write on paper. In dressing material packet or any packet, you cannot write directly on the paper. Okay, it has good barrier property, उसको बुनते नहीं है पेपर प्लास्टिक को और पेपर को, तो barrier property means it does not allow the germs to pass. But if you're putting in the steam sterilizer, then you should have either only paper or paper and plastic. You cannot use plastic and plastic. Okay? Like Tyvek. Tyvek is used for hydrogen peroxide sterilization. Okay? So if steam is there, you need some paper or linen in that. So this you just see, it is also called pharmacy fold. No, pharmacies give the tablets when they dispense like this. So you see, first one, fold the sides, then fold again, and then fold again. So many folds are required to prevent the germs from going inside. And then you put a sticking masking tape or a label on that, okay, or autoclave tape. And you cannot use staples. पिन नहीं यूज कर सकते, ऑटोक्लेव टेप से ही बंद करना है हमें, पिन नहीं यूज कर सकते क्योंकि इसमें छेद आ जाएंगे। और स्टेरिलाइजेशन के बाद लाइन आ गई ऑटोक्लेव टेप पे, और कैंची से देखो कैसे कट करते, यहाँ ओटी वाले भी हैं, तो दे हैव टू, और यू कैन हेल्प देम कट लाइक दिस, और यू कैन टेयर इट हाथ से, वो तो सिंपल फाड़ सकते हैं। सो हाउ विल यू ओपन द पेपर पैकेट? बाय कटिंग विद सिजर
or by tearing by the hand. How will you close the packet? अभी हमने हैवो machine की भी बात की. You will close it by heat sealing or putting a tape. If it is paper plastic, then you have to do heat sealing. If it is only paper, you can put a autoclave tape on top. In case of heat sealing, the heat seal should be continuous. जो seal है वो पूरा बराबर आना चाहिए, गैप नहीं आना चाहिए, क्योंकि कुछ फोल्डिंग नहीं है यहाँ, तो गैप नहीं आना चाहिए, पूरा कंटिन्यूअस सीलिंग होना चाहिए बाय अ गुड सीलिंग मशीन. एंड यू शुड ऑल्सो एग्जामिन, आपको चेक करना चाहिए टेप सील हो या हीट सील हो. यू शुड चेक वेदर इट इज प्रॉपरली फोल्डेड एंड सील्ड. और ऐसे भी पाउचेस आते हैं, आई डोंट थिंक वी यूज मच इन इंडिया, द वेरी एक्सपेंसिव, which are self-sealing. I'll show you picture, then you'll know. Okay, picture will come just now. Self-sealing pouches. So, before that, I will tell you that we cannot use any tape, cello tape, दूसरा कोई tape नहीं use कर सकते. We cannot use rubber band. We cannot use safety pin. We cannot use paper clips, stapler clips. Any sharp object we cannot use to secure the packet. Only autoclave tape or heat sealing by machine. Only two options. Even if you're buying from outside, do not take the one with all these things like safety pins, staples, rubber bands. Okay? Even you cannot hold 5 packets together with the rubber band. Supposing for counting, you're packing 10 together. Okay, you have to give 100, 10, 20, 30. You cannot put rubber band. You can put in that, you can tie it loosely with a gauze. Okay, or you can put it in a bigger paper packet, 10 packets, in a bigger paper packet, but you can't put rubber band. These can puncture the packing material and compromise barrier properties. Beta, please read these words again and again. कि आपके पैकिंग मटेरियल में पंक्चर यानी छेद हो सकता है. बैरियर प्रॉपर्टीज मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को रोकने की प्रॉपर्टी जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अंदर जा सकते हैं, बैरियर प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगी अगर पंक्चर. So you know this, that the first one is a good feel. Second is also okay. पर थोड़ा इधर इधर से जाएंगे जर्म्स, पर यहाँ सील है. This is very bad. Okay, if your machine is doing like that, stop. Don't issue anymore till your machine is fixed. This is a good seal. This is also, I won't say good, book has written good. Okay, chalo, emergency, because the germs can't go. This is a bad seal. You will not believe, I have visited in my 40 years more than 100 hospitals, close to 200. I have seen these things with my eyes. Then nothing I'm teaching you is from the book only. मैं कुछ भी केवल पुस्तक से नहीं पढ़ा रही. मैंने इस टाइप के सील देखे हैं, मैंने इस टाइप के भी देखे हैं. आर पार सील करो कीटाणु अंदर, सील करो कीटाणु अंदर, स्टेराइल करो कीटाणु अंदर. So don't think कि हाँ हमारे वहां नहीं होता. प्लीज बी वेरी केयरफुल. अगर टेप सीलिंग है तो इसको देखो, मैंने कहा था ना ये बताएंगे कि पाउच रेडीमेड है तो इसको ऐसे फोल्ड करेंगे और पूरे पे स्टिकिंग टेप लगाएंगे. पूरे पे लगाएंगे तो बेटर है. ये रेडीमेड पील पाउच है, रेडीमेड पील पाउच. और ये मैंने कहा था जहां पे ऑलरेडी ये गम है, अडीजर मींस गम, बोन, जो पहले से स्टिकी होते हैं, उनको हम ऐसे डबल फोल्ड करके ऐसे ठीक से चिपका. ये खाली फोल्डिंग की लाइन है. यहाँ पे आपको अंदर डालना है, यहाँ पे चिपक है, इसको फोल्ड करके ऐसे चिपकाना है. हम इंडिया में कम यूज करते हैं, पर कंट्रीज में जहाँ पे मैन पावर नहीं है, दे हैव अ शॉर्टेज ऑफ मैन पावर, दे कांट कट, दे कांट सील बोथ द साइड्स, so they open this, they don't have enough people to put tape, cut the tape, stick the tape, so they just fold it and stick it. Okay, it's also in use.
Not in your country maybe, but in use. Dressing material room. The dressing material area is away from the main packing area. Why? ये थोड़ा दूर रखते हैं मेन पैकिंग से, जिससे कि लिंट और फाइबर्स डिपॉजिट नहीं हो इंस्ट्रूमेंट के ऊपर. सील पाउचेस में कुछ भी पैक करो, कैंची हो या ड्रेसिंग मटेरियल, उसको खड़ा रखना है. अगर खड़ा नहीं रखेंगे और स्टीम में डालेंगे, जब एक के ऊपर एक रखेंगे तो प्लास्टिक से स्टीम अंदर नहीं जाएगी और नीचे के पैकिंग में तो बिल्कुल नहीं जाएगी. ओके, सो नो लाइंग डाउन पील पाउचेस, नो कीपिंग देम इनसाइड द ट्रे ऑल्सो. ट्रे के अंदर भी आप ड्रेसिंग मटेरियल पील पाउच में रख के नहीं डाल. तो कैनॉट कीप एनी मटेरियल in a peel pouch inside a tray. You have to keep separate like this. Okay, understood, beta? Labeling. Masking tape is used which has no residue. All the material is written by ball pen, not by markers, because ink will spread. Marker से नहीं लिखना है. Sterilization के दौरान इंक फैल जाएगी, स्याही फैल जाएगी. नेम मैटर शुड बी क्लियर. जो भी आप लिख रहे हो नाम और साइज वो क्लियरली लिखना है. उसको कैंसिल नहीं कर सकते. अगर गलती हुई तो दूसरा लिफाफा ले लो. खैर अब तो हम इतना लिखते नहीं है. मोस्टली वी यूज So, thank you very much. I will take any questions which are related to dressing material first. First, dressing material question or certificate course question. Afterwards, we can take any question. Beta, can you unmute the team? Yes, I have permitted. Are there any questions on the chat? Hello. Hi, yes. Who is this? Identify yourself. Yeah, Gopal Krishna, ma'am. Okay, Gopal Krishna, tell me. Dressing set, no? Which instruments putting there? Scissor and Normally we dressing put, set के लिए yeah. कौन सा set डालते हैं अभी? I understood the question. Instruments. I understood the question. Would anyone like to reply? Anyone, senior? What is there in your dressing set? No one? Anyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Amit Kaushik, ma'am. मैडम कौन है? हाँ अमित बोलो. मैम जिस तरह से क्या है कि मैं नर्सिंग होम में काम करता हूँ एज ए ओटी टेक्नीशियन. हाँ. तो मैम जिस तरह से हम ड्रम्स के अंदर करते हैं ये चीज गोज पीस और ये पैड वगैरह, तो बार बार जिस तरह ड्रेसिंग वगैरह के 2-4 पेशेंट इकट्ठे आते हैं. हमारे पास मानता हूँ कि स्टेराइल ट्रे होती है. तो मैम बार बार ये ड्रम तो ओपन होता है चिटी फोर्सेप्स, तो उसको किस तरह से फिर पैकिंग वगैरह किस तरह से हैंडल कर पाएंगे यहाँ पे? Amit, you are asking a question. I am looking for an answer from this group. I am looking for an answer. Krishna Rao has asked, what are the items which go into a dressing set? Can anyone answer? Brinna. Hello. हाँ. Brinna. मैडम हम लोग को हॉस्पिटल्स में हम लोग को एक किडनी ट्रे, Yes. बाउल, Yes. सीजर, Very good. artery forceps, Very good. non-tooth forceps, Okay. and gauze and cotton ball. Gown and gloves and? Gloves Oh. one pair of gloves and cotton balls And cotton ball. डालते हैं अभी. Okay. So wherever I worked, Krishna Rao, we had one artery forceps, one dissecting forceps,
and a bowl. Yes, ma'am. That's all. Artery forceps, dissecting forceps, and bowl. If you want scissor, you can open another packet. Okay, special packet. Otherwise, scissors get lost. So you phone me personally. I'll discuss on this. Okay, We ma'am. don't have to give too many things in the dressing set. It is different from every hospital. Okay. Okay. So you got the answer, which is a good dressing set with extra things according to me. And what is a simple dressing set? It all depends on your surgeon and nurses. Okay, ma'am. Yeah. So I'm talking only about dressing material, beta, not instruments just now. Okay, okay. Yeah. We will talk about instruments after 5-10 minutes. Let us Okay. finish about the dressing material, about the lecture, about the certificate course. Okay. Okay, good. No problem. No problem. Questions are good. I like questions. Any other question? Anything you can ask, beta. Doesn't matter. There's nothing like a wrong question. This question also we would have taken later. That's all. Every question we will take. So can I ask you all now? What is GSM? What is 60 GSM? Can I have all your videos on for question answer, beta? I can't see your hands. I can't see your face. Everyone's video. Comb your hair. Put on your video. Doesn't matter if you're this fellow. Who is that fellow? Where is he gone? 1 minute. He is working in the OT or CSLD for the full lecture. Sirbi, I'm not shouting at him because he kept his video on. He has courage to keep his video on. Amit Dhara, please put on your video. Nisha, comb your hair. Take 2 minutes. Put on your video. Aditya, Ramanpreet, Pratmesh, please put on your video. Akshay, Muthamiz. If you're not here, then close your video, close the session and go. Put on your video and then you go and do your work. I won't feel sad. I won't feel sad. जो है वो यहाँ रहे. जो है वो अभी पूछो. क्या कौन पूछ रहा है? मुझे समझ नहीं आता. अमित, वीडियो ऑन. कौन पूछ रहा है? कौन? हाथ ऐसे करो, मुझे नहीं पता चल रहा बच्चा. सुमन. हाँ, सुमन पूछो. Ma'am, his mic doesn't seem to work. He's on unmute, but we can't get his voice through. Wait, Suman, wait. I'll come back to you. Wait, huh? Wait. Anyone else wants to ask anything? कुछ भी पूछ सकते हैं, हिंदी में भी पूछ सकते हैं. ग्राम पर स्क्वायर मीटर. वेरी गुड अमित. अभी बात करने का, मेरे को पढ़ने को, मैं पढ़ नहीं सकती, मैं आप लोग की शक्ल देख रही हूँ. वेरी गुड. सो अमित हैज रिटन GSM means grams per square meter. You have to cut a 1 meter piece of your paper. You don't have paper, then you cut 10 by 10 centimeter. 10 by 10 centimeter का कितना वजन है, तो 1 मीटर का कितना वजन होगा? You can calculate, no? If you can't calculate, I've given my number, no? Put all my links and my phone number, please, Meher, on this thing, because others also will be seeing it. Yes. Yeah? You can phone me how to calculate grams per square meter. It's very easy. 1 meter में 60 ग्राम होना चाहिए. तो 10 by 10 या जितना भी पीस आपके पास है, उसका कितना ग्राम होना चाहिए? It is very important for paper, for gauze. Okay? Who is this Manjari Sawan smiling? Manjari, इधर आओ. अरे इधर नहीं आओ, खाली कैमरा में आ जाओ. From where are you, Manjari? From where are you, so sweet? I'm working in Tata Hospital. Tata Hospital, Vijay Mistry, लिख लो. Manjari, Tata Hospital. Manjari. And who is this colleague of yours, Mooch wala? Is Who? Bipin. हाँ, Manjari and Bipin from Tata Hospital.
Tata where beta, Parel or Banaras? Parel. Thank God. So we have Rupesh here from Banaras. Brinna from Banaras. You want to say hi to Brinna, but he doesn't come. I don't know. He's very handsome, but he doesn't come. Okay. All this after the recording. Any more questions? So Mehek, can we shut off the recording and fool around?